जैसे मैम आज जनरल इलेक्शन 2024 का फाइनल फेज खत्म हो चुका है विद लोकसभा काउंटिंग का कितना पोलिंग का काउंटिंग का हो चुका है, तो आज आपके जो इस यूनिट पे कौन कौन सा पोस्टल बैलेट का काउंटिंग हुआ है और कौन कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग हुआ है, हमें ब्रीफ कर दीजिए। ओके जैसे आप सबको पता ही है कि टुडे वाज द काउंटिंग फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड हमारे दो पीसी के कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो आलो बीइंग द सीट फॉर रिटर्निंग ऑफिसर फॉर वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा यहाँ पे counting for assembly segments of the three assembly constituencies and the segments which is falling in West Siang, which is 27 Liromova, 30 along west and 31 along east. उसके साथ साथ entire postal ballot of the entire West Parliamentary constituency was also conducted in Alo counting hall. So आप सबको पता ही है, as you have been following up from the morning, हमारा commencement of the counting था from 8 a.m. and 8 a.m. sharp we commenced with the counting of the postal ballot and the ETPBS scanning. Thereafter 8:30 we commenced with the counting of EVM vote count. एंड क्योंकि हमारा पोस्टल बैलेट एंटायर वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से था, विच मीन्स कि द एंटायर 15 districts that's falling within the West Parliamentary constituency, which means there are 33 assembly segments. All the postal ballots were also counted in the Alo counting center. So total postal ballot per se, if you say, was 22,719, which we were able to conduct in our counting venue, which is the Government Higher Secondary School, Alo. So, because the number of postal ballot for the entire West Parliamentary constituency is quite a high number, hence the slight prolongation in the entire counting process. लेकिन हमने successfully conduct कर लिया. Before the close of dawn, we were able to complete the counting process, and we got the cooperation from all the candidates, their representatives, the counting agents, even the media persons, security, and all the other participants who are involved in the counting process. So we've just declared the candidate for one Arunachal West Parliamentary constituency elected to the Lok Sabha in 2024 elections. And talking about the winning candidate, Shri Kiran Rijiju has secured a total of the winning candidate has secured a vote of 2,05,417 and with a margin of 96,315. And trailing behind Kiran Rijiju, the trailing candidate was Nabam Tuki with a vote of 1,100,000. And talking about the entire security arrangement and the counting premise arrangement, our security were placed at in a three-tier cordoning system, wherein the outermost cordon was particularly and specifically for pedestrians. So it was the pedestrian zone, and the 100-meter perimeter was the third tier cordoning. And similarly, the inner cordon 1 and 2, the inner tiers consisted of state armed police and the CRPF forces, paramilitary forces, so that the counting could be conducted in a safe and secure manner. But very fortunately, there were no untoward incidences. Everything was conducted very smoothly and very peacefully. And fortunately, with everybody's cooperation, today's counting process has ended. मैडम एक सवाल रहेगा, आप न्यूली यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एज ए डिप्टी कमिश्नर आया है, आते ही आप यहाँ असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन जो है कंडक्ट किया है, तो आपको पर्टिकुलरली वेस्ट सियांग में क्या एक्सपीरियंस लाया, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के एरिया, आप आते ही एक सक्सेसफुली, आज बोलूँगा सक्सेसफुली 2 इलेक्शन को कंडक्ट किया है, आज काउंटिंग खत्म हो गया, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का? और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? नॉट पर्सनल, हाउ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर, ये दोनों इलेक्शन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? Okay, the election experience in West Siang was
नॉट चैलेंजिंग पर से, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पहले भी इलेक्शन इज़ वन ऑफ द कोर ड्यूटीज़ ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकता है, एंड एज डीसी सारा इन ऑल ओवर द कंट्री इलेक्शन कंडक्ट करते हैं. तो इवन इन माई प्रीवियस पोस्टिंग आई हैव कंडक्टेड. हाउएवर अरुणाचल में दिस वाज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एज डीसी कंडक्टिंग द इलेक्शन, एंड इट वाज अ वेस्ट सियांग इन पर्टिकुलर आई कैन स्पीक अबाउट, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तो इतना वो नहीं था. हाउएवर एज आरओ वन अरुणाचल वेस्ट पीसी वी वर कोऑर्डिनेटिंग जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, जो बाकी 33 असेंबली सेगमेंट्स है, वी वर कोऑर्डिनेटिंग विद द कंसर्न्ड डीईओज वहाँ के भी. तो बहुत ही कंड्यूसिव था, एंड ऑफ कोर्स सम प्लेसेस देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ रीपोल, लेकिन रीपोल भी बहुत स्मूथली कंडक्ट हुआ था. And as such, this time I would say there were no untoward incidences. There were no extreme cases of violence or major cases that could be considered as grave offences. So fortunately इस बार ठीक रहा, and I think personal experience बोलने से I think this was also one of my best experiences in conducting elections. And West Siang went very smooth. There were hardly any offences. There were not too many violence cases also, और सारे candidates were very cooperative. तो experience अच्छा रहा.